हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो आई एम हेयर विद येट अनदर वीडियो ऑन जॉन ब्राउन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है ISC बोर्ड 2024 के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं थी और इस बार इसके लॉन्ग क्वेश्चन 5 या 10 मार्क्स के आने की उम्मीद है मुझे। राइट, इट्स वेरी सब्जेक्टिव बट आई थिंक दैट जॉन ब्राउन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम। तो इसका लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। So, what is John Brown about? John Brown is personally one of my favorites. एंड आजकल के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट भी है बिकॉज इट्स ऑन वॉर। इट्स एन एंटी वॉर पोएम। एंटी वॉर मतलब जो भी पोएम हमें किसी भी तरीके के वॉर के अगेंस्ट मोटिवेट करती है, राइट, कि वॉर नहीं होना चाहिए। जो भी पोइट्री या जो भी स्टोरी या जो भी लिटरेचर हमें इस तरफ मोल्ड करती है दैट देयर शुड बी नो वॉर, दैट इज कॉल्ड एन एंटी वॉर, राइट। सो लाइक दिस जॉन ब्राउन इज ऑल्सो एन एंटी वॉर पोएम। जॉन ब्राउन लिखी किसने है? बॉब डिलन में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जॉन ब्राउन और बॉब डिलन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मत करना। जॉन ब्राउन जो है बॉब डिलन ने लिखी है। बॉब डिलन एक बहुत ही अच्छे सिंगर रहे हैं and he has written many songs and John Brown was also supposed to be one of the song जो कि उसके official music video में video album में आनी थी, मगर उस टाइम पर नहीं आई। बट नाउ इफ यू सर्च यू कैन लिसन टू दिस सॉन्ग कॉल्ड जॉन ब्राउन। सो इट्स अ लिरिक। व्हाट इज जॉन ब्राउन? जॉन ब्राउन इज एन एंटी वॉर लिरिक। इट इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ बैलेड। एक कहानी की फॉर्म में लिखा है। बैलेड क्या है? जो भी कोई पोइट्री हमें एक कहानी की फॉर्म में सुनाई जाती है, that is a ballad. So John Brown is an anti-war lyric and it is in a ballad form, right? तो like I told in the previous video डॉल्फिन्स वाले कि भैया ये पैराग्राफ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये पैराग्राफ अभी भी पढ़ लो एंड यू कैन ऑल्सो लर्न इट टू राइट इट इन योर पेपर्स, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स में आपको ये एक बहुत ही कॉमन इसका क्रक्स दिया होता है पोइट्री का। So what is John Brown? John Brown is an anti-war lyric written in October 1962. The song was never included on any of Dylan's official studio albums. The song highlights the toll war takes on young men who are blinded by the aura of heroism and machismo surrounding war, only to realize later that they were nothing but cannon fodder. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो ये सॉन्ग है, जो ये जॉन ब्राउन है, ये हाईलाइट करता है कि वॉर को कितना हीरोइक माना जाता है, हीरोइज्म माना जाता है एक वॉर में जाना। और एक बाबा कितने बड़े हीरो बन गए, मेरा बेटा वॉर पे जाएगा। बट ये लोग जो है ब्लाइंड हो जाते हैं इस हीरोइज्म में और ये नहीं समझते कि आप सिर्फ एक पपेट हो। एक सोल्जर एक पपेट बन के रह जाता है हु इज़ परफॉर्मिंग फॉर समबडी एल्सेज अल्टीरियर मोटिव, राइट। तो हु आर ब्लाइंडेड बाय द ऑर ऑफ हीरोइज्म, कि वॉर पे जाना एक हीरोइक एक्ट समझते हैं लोग, बट एक्चुअली क्या है? एक्चुअली कुछ नहीं है। बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि वॉर में कैनन फॉडर के सिवा, गोली बारूद के सिवा और कुछ नहीं है, राइट। द वॉर हैज़ नो मीनिंग, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व बाय पीस एंड गोइंग टू द वॉर just means death and lots of destruction and only cannon fodder, right? So इसमें बताने के लिए, समराइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इतना है कि हाँ, जॉन ब्राउन जो है, जॉन ब्राउन की मदर और जॉन ब्राउन इस पोइट्री में हमें मिलेंगे। और उसकी मदर हमेशा बहुत खुश रहती है दैट माई सन इज़ गोइंग टू अ वॉर, और वो वॉर में जाएगा और मैं उसकी तस्वीरें लगाऊंगी और मैं उसके मेडल्स जो है वॉल पे सजाऊंगी। बट अल्टीमेटली होता क्या है? जॉन ब्राउन कम्स बैक इन अ वेरी बैड कंडीशन और तब उसे रियलाइज़ होता है कि नो, वॉर वॉज नॉट एट ऑल अ हीरोइक थिंग। अब मैं क्या करूँगी इस मेडल्स का? मेरा बेटा ही देखने लायक नहीं है, एकदम ऐसी हालत में आया है वो। So let's start straight away with the poem. Before starting the poem, I remind you, please like the video and subscribe to my channel. I'll be covering whole course of your board examination before your board examination, well before your board examination. So press the notification bell also. John Brown by Bob Dylan. John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mama sure was proud of him. He stood straight and tall in his uniform and all. His mama's face broke out all in a grin. John Brown went off to a war to fight on a foreign shore, कि वो एक फॉरेन जगह पे जाता है एक वॉर लड़ने। अच्छा, ये कौन सा वॉर है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है,
तो इसीलिए ये यूनिवर्सली जितने भी वॉर्स हैं सब पर लागू होता है, राइट? एवरी वॉर इज द सेम. John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mama sure was proud of him. His mother was always proud of him, very proud of him, that my son is going to the war. He stood straight and tall in his uniform and all, and he was also, feeling proud that I'm wearing this uniform. I'm looking so handsome. So he stood all tall and strong and straight in his uniform and all. His mama's face broke out all in a grin, and his mother's face has a smile on it. Grin मतलब एकदम pride वाली जो smile होती है ना, वो smile. Oh son, you look so fine. I'm glad you are a son of mine. तो ये mother का dialogue है अब. इस poetry में dialogue भी है. Oh son, you look so fine. I'm glad you are a son of mine. You make me proud to know you hold a gun. Do what the captain says, lots of medals you will get, and we'll put them on the wall when you come home. कि you're looking so handsome, my son. कितने सुंदर लग रहे हो तुम, and I'm glad कि तुम मेरे बेटे हो. You are my son, and you are making me proud. किस चीज़ से proud है उसकी मदर कि उसका बेटा गन होल्ड कर रहा है. बट ये इतनी शैलो बात है, इतनी हॉलो बात है कि वो गन किसने होल्ड कर रहा है. What will he do with that gun? He will not go and play with that gun. He is going to kill people, right? He is going to defend himself, and for defending himself he has to kill people. तो इसमें कोई प्राउड की बात ही नहीं है that my son is holding a gun. This should not happen in the world. We should not need guns at all. You make me proud to know you hold a gun. Do what the captain says, lots of medals you will get. एंड वील पुट देम ऑन द वॉल व्हेन यू कम होम. तो बहुत सारे मेडल्स तुम्हें मिलेंगे, जैसा कैप्टन कहेगा वैसा करना. क्या होगा उससे? तुम्हें बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे और हम मेडल्स जो है अपनी वॉल पर सजाएंगे. बट शी इज़ नॉट रियलाइजिंग व्हाट ही इज़ एक्चुअली गोइंग फॉर. तो वॉर के अराउंड इतना हीरोइज्म और इतना ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन है इस पोएम में वॉर का, राइट? दीज आर द की वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर टू राइट योर आंसर्स ऑल्सो. ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, एंटी वॉर पोएम, heroism around the war. His mother feels proud to send him to war. The gun becomes a symbol of his bravery, and something very shallow, but actual meaning of holding a gun is that he is going to kill somebody. As that old train pulled out, John's ma began to shout, telling everyone in the neighborhood, "That's my son, that's about to go. He's a soldier now." तो उसकी मदर का क्या रिएक्शन है? जैसी जो है ट्रेन जाने लगती है, वैसी जॉन की मम्मी जो है इधर उधर सबको बताने लगती है अपने नेबरहुड में कि देखो देखो वो मेरा बेटा है. ही इज माई सन एंड ही इज अबाउट टू गो टू द वॉर. ही इज बिकम अ सोल्जर नाउ. शी इज सो प्राउड ऑफ हिम. She made well sure her neighbors understood. और वो इतना ज़्यादा बोस्ट करती हैं इस चीज़ को ताकि उसके नेबर्स को पक्का पता चल जाए कि ये इन्हीं का बेटा है और ये फाइट करने जा रहा है वॉर में. एंड व्हाट इज दैट मदर डूइंग? मदर इज just feeling proud, and she is not in his shoes. She is not going to kill anybody. She is not going to face the gun. She is not going to be shot. She is not risking her life, but she is so she is overlooking the fact that it might kill her child. She got a letter once in a while. तो अब जो है जॉन ब्राउन जा चुके हैं वॉर पे. She got a letter once in a while, and her face broke into a smile as she showed them to the people from next door, and she bragged about her son with his uniform and gun, and these things you called a good old-fashioned war. Oh, good old-fashioned war. तो अभी क्या हो रहा है? अभी क्या है कि उसको लेटर आता है उसके सन से, एंड जैसे ही लेटर आता है शी इज स्माइलिंग एंड शी इज शोइंग इट टू पीपल, टू नेबरहुड, एंड शी इज ब्रैगिंग. ये ब्रैगिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रैगिंग मतलब बोस्ट कर करके, ऊंचा कर करके बोलना, देखो मेरा बेटा यूनिफॉर्म और गन में है, देखो वहां से उसका लेटर आया है. और इन सब चीज़ों को वो कैसे डिस्क्राइब कर रही है? जैसे कि बहुत ही बहुत वेग टर्म है ये किसी वॉर के लिए. गुड ओल्ड फैशन वॉर, जैसे कि कोई पार्टी हो रही हो, जैसे कोई इवेंट हो रहा हो. गुड ओल्ड फैशन वॉर. ओ गुड ओल्ड फैशन वॉर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले के जो पोइट्री और जो एंशियंट पोइट्री जैसे होमर वगैरह लिखते थे, तो इन्होंने सबने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करा है वॉर को ऐसे दिखाया है जैसे इट्स समथिंग टू, इतना ज़रूरी है और इतना खुशी से बताया उसे दैट दिस वॉर हैपन एंड दिस वॉर. तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर बहुत हुई है लिटरेचर में. तो लेकिन ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ है ही नहीं वॉर में. अगर आप सिर्फ वॉर की रियलिटी देखोगे तो क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ वॉर? चिल्ड्रन आर डाइंग, women आर डाइंग. अभी भी क्या हो रहा है? एवरीबडी इज डाइंग अराउंड. देयर इज जस्ट ब्लड शेड, ब्लड है हर जगह. एंड
पूरा डिस्ट्रक्शन है इकोनॉमी का, देयर इज नथिंग एल्स इन द वॉर, राइट? बट दिस इज वेरी आयरॉनिकल व्हेन बॉब डिलन राइट्स इन द पोएम थ्रू द मदर्स वॉइस, अ गुड ओल्ड फैशन वॉर, ओ अ गुड ओल्ड फैशन वॉर। और देखो एम्फेसिस है, रेपिटेशन का मतलब क्या है कि जो पोएट है वो इस बात पे एम्फेसाइज करना चाह रहा है। Then the letters ceased to come. For a long time they did not come. They ceased to come for about 10 months or more. Then a letter finally came saying, "Go down and meet the train. Your sons are coming home from the war." तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे लेटर्स बंद हो गए आना। सीज्ड मतलब स्टॉप्ड, द लेटर्स स्टॉप्ड कमिंग। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे डिड नॉट कम, दे सीज टू कम फॉर अबाउट 10 months, और 10 महीने तक कोई लेटर ही नहीं आया, राइट? 10 months or more there was no letter. Then a letter finally came saying, "Go down and meet the train. Your sons are coming home from the war." And the letter finally came, "Go down towards the train. Your son is coming back home from the war." She smiled and went right down. She looked everywhere around, but she could not see her soldier's son in sight. Sight मतलब जहाँ तक उसकी नजरें जा रही थी वहाँ तक उसका बेटा उसे दिख ही नहीं रहा था। वो गई वहाँ पे ट्रेन तक, बट हर तरफ देखा उसने, but she couldn't find her son. But as all the people passed, she saw her son at last. जब सारा क्राउड निकल गया, सब लोग वहाँ से चले गए, तो उसने at last अपने बेटे को देखा. When she did, she could hardly believe her eyes. And when she saw her kid, she could hardly believe her eyes. उसे believe ही नहीं हुआ. Whatever she saw, she couldn't believe. And what did she see? Oh, his face was all shot up and his hand was all blown off. तो अभी हम एकदम से glorification of war से reality of war में आ चुके हैं, right? So what is the irony in this poem? The first half of the poem is the glorification of war, and the second half of the poem is the reality of war. Now the reality breaks in. Now all the medals she was about to hang on the walls will not mean anything. Oh, his face was all shot up and his hand was all blown off. And he wore a metal brace around his waist. His hand was blown off and his face was all shot up and he was wearing a metal brace around his waist. He whispered kind of slow in a voice she did not know. Even the voice was not recognizable. While she couldn't even recognize his face. She couldn't recognize his voice, she couldn't recognize his face. But what did the soldier whisper? Oh Lord, not even recognize his face. देखो यहाँ पे एक और बार repetition है. While she couldn't even recognize his face, oh Lord, not even recognize his face. Emphasis है that उसका चेहरा ही देखने लायक नहीं बचा. She couldn't even recognize the son she was so proud of and she was boasting about in her neighborhood. Oh, tell me, my darling son, pray tell me what they done. How is it you come to be this way? Oh, tell me, my darling son. Ab batao, she's asking her son that what happened to you? As if she didn't know what happened to him. As if she didn't turn him into a war. Oh, tell me, darling son, pray tell me, please tell me what they done, what they have done. How is it you come to be this way? How have you become like this? He tried his best to talk, but his mouth could hardly move. And the mother had to turn her face away. And the mother, who was so proud looking at him, had to turn her face away because she could not bear looking at him now. He tried his best to talk, but his mouth could hardly move. Don't you remember, Ma, when I went off to war, you thought it was the best thing I could do? Do you remember, Ma, that when you were sending me off to the war, you thought that it was the best I could do in my life, that I will go to the war and I'll make you proud and win the medals. I was on the battleground, you were home acting proud. I was in the battleground, I was actually fighting a real war when you were just boasting about a heroic war in your imagination. You wasn't there standing in my shoes, and you were not even standing in my shoes. You do not even know what a war is. And I was there fighting in the battlefield when you were dancing around and boasting about your son going to the war. Oh, and I thought when I was there, God, what am I doing there? So as soon as I entered, John Brown is saying that as soon as I entered the battlefield, I realized at that moment, oh God, what am I doing here? I am trying to kill somebody or die trying. I'm trying to kill somebody. I'm trying to kill a human being. I'm dying, trying to save myself or to kill the other person. But the thing that scared me most was when my enemy came close and I saw that his face just looked like mine. Oh Lord,
just like mine. And what was the scariest thing in the war? The scariest thing in the war was कि जब मेरा दुश्मन मेरे सामने आया और मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने देखा कि उसका चेहरा ठीक मेरे जैसा है, because he is also human. उसको भी शूट करोगे तो ब्लड निकलेगा, राइट? तो सबसे स्केरियस्ट थिंग उसके लिए वॉर में क्या थी? टू फेस द एनिमी एंड टू सी दैट ही इज किलिंग वन ऑफ हिज ओन काइंड. When my enemy came close and I saw that his face looked just like mine, oh Lord, just like mine, and I couldn't help but think. Again, repetition है, oh Lord, just like mine, emphasis है इस पे, ठीक है? बहुत बड़ा emphasis है ये कि what do you realize when you go to a war? You realize that you're killing other human beings who are just like your own self. And I couldn't help but think, through the thunder rolling and stink, that I was just a puppet in a play, and through the roar and smoke, this string is finally broke, and a cannonball blew my eyes away. And जब मैं वहाँ पे था, war पे था, I couldn't help but think, through the thunder rolling and stink. क्या था war में? What was the reality of war? That there was a thunder rolling and stink, कि बिल्कुल सब धुआं धुआं है, और स्मेल है किस चीज़ की? सिर्फ कैनन बॉल्स की स्मेल है, सिर्फ गोली बारूद की स्मेल है. And when I was in that scenario, what I realized that I was just a puppet in the play. मैं क्या हूँ? मैं एक कठपुतली हूँ, puppet, कठपुतली हूँ, and I am just acting on what others want me to do. I don't have any problem with the person standing in front of me, but I am a puppet in this whole scenario. And through the roar and smoke, this string is finally broke, and a cannonball blew my eyes away. And through the roar and smoke, ये सब एकदम smoke के बीच में, this string is finally broke. String मतलब वही cannonball के जो निकलती है string. तो जब string खींचते हैं तो क्या निकलता है? cannonball निकलती है. और जब मैंने ये सब मैं सोच ही रहा था, एकदम से वो string हटी और cannonball आई और my eye was blown away. So this is the reality of war, you know. हाथ कट जाना, आंख चली जाना, मर जाना, ब्लड, स्टिंक, स्मेल, स्मोक, noise, right? All this is the reality of war, not the medals on the wall. As he turned away to walk, his ma was still in shock at seeing the metal brace that helped him stand. But as he turned to go, he called his mother close and he dropped his medals down into her hand. तो क्या हुआ कि जैसे ही वो he turned away to walk, his ma was still in shock. Mother was still in the shock at seeing the metal brace that helped him stand. He was standing with the help of a metal brace. He was not standing on his two legs now. But as he turned to go, और जैसे ही वो जाने लगा, he called his mother close. He called his mother, and what he did कि जो medals थे ना, वो सारे उनके हाथ में थमा दिए. That keep the medals now. You know, this was the reality of war, but for you it was the glorification of war. तो ये बहुत बड़ी irony है, और इस पे question भी बन सकता है that how the irony of the last line, and he dropped his medals down into her hand. कि वो medals जब वो कहती है, you know, एक वो sentence है when she says that do what the captain says, lots of medals you will get, and this sentence, and he dropped his medals down into her hand. तो इन दोनों sentence में कितनी irony है, where she was thinking कि यार ये party करने जा रहा है एकदम, you know, he'll win the medals for me and I'll hang on the wall. And finally when he gave the medals to his mother, the medals had no meaning. He cannot walk, he cannot talk the way, you know, he was before. Everything has changed from this point in their life. So when I used to teach my students, I used to tell them that the one who is the cause of the war never fights the war, right? So war में सिर्फ हम puppets होते हैं who are actually sacrificed. The main people who are causing this war to happen never sacrifice for war. So war is a very bad thing. We should not support any kind of war. We should not take any sides कि ये side सही है, वो side सही है. Anything the war is doing is destruction. It's only destruction. Economic, physical, emotional, every kind of destruction. So with this, I would like to end this poetry. And I would like to take you to the specimen question. पिछले year में कोई question नहीं है, previous year paper में. So we'll move on to the specimen paper, and we have this one question here, the short question. In the poem John Brown's mother boasted about her son going to war because she thought
that war was something to be proud of. She glorified war in her imagination and she boasted about that war to her neighbor. She was proud of her son and she thought that war was a heroic act. मतलब इन सब लाइन में से कुछ भी तुम यूज कर सकते हो इस आंसर के लिए. अब ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है स्पेसिमेन पेपर में. Describe how the poet in the poem John Brown establishes the hollowness behind the glorification of war. ठीक है, तो ये पूरी पोएम ही इसी बारे में है कि कितनी हॉलो है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर करना कितना हॉलो है. राइट योर आंसर इन अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स सपोर्टिंग योर एनालिसिस विद एनी 2 डिटेल्स फ्रॉम द पोएम. अब 2 डिटेल्स में तो एक डिटेल हमने अभी डिस्कस कर दी, राइट, कि मेडल्स वाली आयरनी आप बता सकते हो उसमें कि हाउ शी वाज ग्लोरीफाइंग द वॉर, मेडल्स वाली आयरनी. एक आयरनी आप ये बता सकते हो कि ओ गुड ओल्ड फैशन वॉर से आप कंपेयर कर सकते हो दैट ओ लॉर्ड नॉट इवन रिकग्नाइज हिज फेस, राइट. ये 2 एम्फेसिस जो उसने करे हैं एकदम कॉन्ट्रास्ट है. यू कैन फाइंड मोर इंस्टेंसेस ऑल्सो, बट ये दोनों आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो, राइट. दैट हाउ आयरॉनिकल इट इज दैट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम शी इज सेइंग एंड टेलिंग हर नेबर्स that oh good old fashioned war, he has gone to the war, and when she sees her son for the first time after he has come back from the war, she is saying, oh Lord, I could not even recognize his face. So what the war has actually caused, how the glorification has turned into a reality for her. So that's all for today, students. I hope you liked the video. Please press the like button and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.